just because we have picked our teams for between Crick Bucks, members. And another team which I have picked up is Sunrisers Hyderabad. आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद की स्क्वाड देख के मुझे रियल मैड्रिड की 2000s की टीम याद आती है कि बेंच पे सारे ही स्टार्स हैं, टीम में सारे स्टार्स हैं, किसको खिलाए, कब खिलाए, इट्स अ वेरी बिग कंफ्यूजन। और ऊपर से इन्होंने एक और नेले पे दला फेंक दिया है कि भाइयों ने पैट कमिंस को 24 करोड़ दे दिए हैं। एंड ही दे आर थिंकिंग इट्स ओल्ड इंडियन मेंटालिटी कि भाई ये चल रहा है तो ये चलता ही रहेगा। तो 24 करोड़ दे के उसको बोल दिया गया है कि भाई तू कैप्टन बनेगा। एडम मार्करम जिस बेचारे ने उनको दो साउथ अफ्रीका में टाइटल जिताए हैं, अब उसकी पोजीशन इन द टीम इस क्वेश्चन मार्क में आ गई है, विल ही गोना प्ले और नॉट। But leaving all these controversies or whatever speculations aside, I would like to discuss about the squad. What do you think about their auction, and how would you rate their squad? Go ahead, guys. यार स्क्वाड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे मूव समझ में नहीं आते सनराइजर्स के। ऐसा नहीं है, ये टीम हमेशा से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीजन इटसेल्फ दिस टीम हैज बीन अ वेरी डिसेंट टीम। कभी बॉलिंग हावी रही है, कभी वार्नर हावी रही है, राइट, जीती भी है एक बार कप। बट ये प्रॉब्लम इज लाइक मुझे समझ में नहीं आता इनकी डिसीजन मेकिंग क्या है। वो आई थिंक वो इनकी जो बार बार वो टीवी पे जो ओनर दिखाते रहते हैं, आई थिंक वो डिसीजंस लेती हैं, तो ये अलग ही टाइप के कुछ अलग टाइप के डिसीजंस होते हैं। लाइक आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई आप इतने प्लेयर पहली बात तो पिक कर लेते हो, ठीक है। इनके स्क्वाड में अगर देखा जाए तो टोटल इनके स्क्वाड में 25 प्लेयर हैं, ठीक है। 25 प्लेयर में से 11 ने खेलना है, ठीक है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके मैं 4 फॉरेन प्लेयर कौन से पिक करूं, क्योंकि मोस्टली सारे प्लेयर्स फॉर्म में, ठीक है। और सबसे मेन बात डिबेटेबल इज लाइक यार पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का T20 कैप्टन नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू बी स्मार्ट अबाउट दैट। He is not a T20 captain. He is not a T20 player as well. Even KKR, maybe when he used to play, he won couple of games for them, but he was not a certain in 11. So Yeah. अब पता नहीं कि भाई इन्होंने क्या सिलेक्शन किया है। तो आई फील वेरी बैड फॉर मार्करम बिकॉज he did really well in the South African League, but even in IPL he was decent enough. भाई अब आप सिलेक्शन ही आपका टीम तो कोचेस वगैरह मिलके ऐसे कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो। But I will still say कि just going by the strength of 25 players, they are a perfect team if they find the right balance. But Yeah. last year also their right balance was not found in like 14 games, and I have a feeling that it will be a repeat of last year. They won't able to find any balance. If they find it, this will be the team to beat. Yeah, for sure, for sure. I Yeah. agree on it because ऐसा सच में ऐसा लग रहा है कि पूरे स्टार्स भर लिए और अब किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। मतलब डेविड बेकहम बेंच हो गया था उस स्क्वाड में, तो Yeah. यहाँ यही होने वाला है मुझे लग रहा है इसके साथ भी। तो क्योंकि इतनी ज्यादा रिसोर्सेज जब आपके पास अवेलेबल होती है ना, तो वो कंफ्यूजन स्टेम करती है, और जब कंफ्यूजन स्टेम होती है तो स्क्वाड में भी इनसिक्योरिटी रहती है एंड वो परफॉर्मेंस भी नहीं निकल के आती। एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज सीन टीम्स लाइक चेन्नई, मुंबई thrive on these because people and players are secure. But जब इतने ज्यादा टीम में आप भर लेते हो ना लोग, तो people are insecure, and that is what reflects in their performance. And which rightly Right. pointed. And history wise too, if you remember, सबसे पहले IPL में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम ऑन पेपर हैदराबाद ही थी, जिसमें शाहिद अफरीदी, साइमंड्स, गिलक्रिस्ट, आरपी सिंह, सब प्लेयर्स थे। रोहित शर्मा। Yeah, and they were the first team to get disqualified. मेरे ख्याल 9th या 10th फिनिश करा था इन लोगों ने। Exactly. Yeah. तो Yeah. that was, मेरे को वो हिस्ट्री टाइप लग रहा है कि इतने प्लेयर भर लिए। Which is true, but now just coming back to the 11 and वे इन्होंने जो decision लिया है कि भाई Pat Cummins should be the captain. I feel like they're gonna go to a totally different direction. That means कि भाई I think Travis Head gonna play. If I'm wrong, let me know. I feel if Travis Head plays, Pat Yeah. Cummins is the second foreigner. Henry Klassen you Henry, have to play Karan, because he's the only Karan- wicketkeeper you have. But Karan, let's go by order ना। तू Sure. if you are playing your 11 जैसे हमने RCB का किया था। Sure. So let's do this कि Travis Head opens for you. Okay, I get it. Yeah. Then who's opening with Travis Head? Yeah, Travis Head के साथ obviously Mayank Agarwal will open. अच्छा, मयंक अग्रवाल ओपन करेगा, Your ठीक है। first down will be Rahul Tripathi. राहुल त्रिपाठी, okay. ठीक है। Second will be I think because Henry Klassen last year कुछ ज्यादा नीचे आ रहा था because of Adam Markram. I feel he might move up the order, and then Okay. Markram will be your number 4. Number 5, I'm so sorry I've missed one player, Abhishek Sharma. Because Yeah. उसने not only he is batted well, but he has given them few overs as well.
So if but batted Abhishek well Sharma only only he's batting opening, well. so Yeah, agar, yeah, it's then that's the thing, man. Like it becomes very tricky because Agarwal tried batting down the order, he was not successful. Yeah. So agar Agarwal is opening, then where Abhishek Sharma goes? If he comes at number three, then Tripathi goes to four, and then Klaasen comes at number five. So yeah. it's a very tricky situation. I don't know. With Adam Makram going out of the picture, I think they have to work their numbers. I don't know, man. And then Abdul Samad playing, I want him. Jammu Yeah. Londa from my state city. I want him to play, but I don't know how reliable he is. Being very honest, कितनी games उसने as a finisher आपको last year दी है, apart from that one game at the end. So yeah, it's a very tricky situation. I don't know. You I tell think me, So man. your बंदा this नहीं is ढूंढेगा। your six. Yeah. This is your Yeah, six. yeah. Number Like पांच तो मेरे को है. Travis Head, Mayank Agarwal. Then one down was Tripathi, two down is Markram, three down Abhishek Sharma, Tripathi, then Klaasen, and and then Markram. Abdul Samad, and then I think Marco Jansen at number seven. You're playing Marco Jansen and Pat Cummins both. I don't know, man, because then who's the all-rounder they're gonna play? Either then Wanindu Hasaranga might play, but then आपके already तीन हो गए हैं, top order. So Okay, I don't but know. It's a very tricky but this situation. is मैं वही कह रहा हूँ यार देख अब इतना टैलेंट लेने के बाद भी Yeah. इतना टैलेंट लेने के बाद भी दिस इज नॉट तो आप मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन माय टॉप आई विल बी वेरी क्विक टॉप 7 विल बी आई थिंक I don't feel like Travis Head should play because after that World Cup miracle, he has been super duper out of form. So, just being an Aussie, if gets you in top 11, I'm not sure about that. But yeah, I don't think Travis Head should play. Rather than that, they should go for in the first game, they should go for Abhishek Sharma and Mayank Agarwal to open, Rahul Tripathi at 3. This solidifies their middle order like crazy. Rahul Hmm. Tripathi at 3, then Aiden Markram at 4, Henrik Klaasen at 5. And then number 6 can Yeah. be either Abdul Samad. Number 6 can be either Abdul Samad or you can go for like the all-rounders route. Sixth, at number 6, you can play Marco Jansen. Yeah. Because they have the liberty of playing Pat Cummins at number 7, Washington Sundar at number 8, Yes. right? And then the three bowlers will be Indian Bhuvneshwar pacers. Kumar. Yeah, Bhuvneshwar Kumar, T. Natarajan and Natarajan. Umran If Malik. it's a spin wicket, Mayank Markande can play, and if it's a faster wicket, Umran Malik or Jaydev Unad. Even if it is a spin wicket, then you can choose between Jansen and Wanindu Hasaranga as well. Yeah, that's another selection Yeah. as well. So yeah, I didn't think that route because I was trying to fit in Travis Head, considering like again like वो mindset वहां पे जा रहा है just because वो World Cup heavy आए हैं तो that's why. नहीं वर्ल्ड कप हैवी आए हैं बट उसके बाद तो ट्रेविस हेड ने तो कुछ परफॉर्म किया ही नहीं ना कहीं पे भी Yeah. परफॉर्मिंग 29 की ही इज एवरेजिंग 29 Yeah. all across formats he's scoring 29 runs per game so that doesn't justify his selections and then you have like in form Glenn Phillips who's sitting outside But वो तो जगह ही नहीं बनी ना. जगह ही नहीं बनी यार that's what Abhishek गिरी क्या मोटी थी 11 man. I mean, I think कुश और मेरे में बस एक ही डिफरेंस है. I think maybe I'll push Rahul Tripathi to open because he's batting at 3 and fit in another player of I know there is a limited Indians, but maybe instead of Travis Head, I'm not playing Travis Head for sure. So top Yeah. 6 remains the same, but मुझे ऐसा लगता है कि अनमोलप्रीत सिंह open करेगा, which was the combination last time around. और तो मयंक अग्रवाल की जगह मयंक अग्रवाल, हाँ मतलब आइदर मयंक या तो मयंक अग्रवाल की जगह. मयंक अग्रवाल मुझे नहीं लगता पहले फ्यू गेम्स बैठेगा तो अभिषेक शर्मा ही बैठेगा. वो पर्सनल टर्मोइल भी चल रहा है अभी कुछ तो आई नो Yeah. मे बी दैट इज द रीजन ही माइट नॉट प्ले. आई थिंक यही रहेंगे टॉप 6 अदरवाइज जो पुश के थे. Yeah. okay Anmolpreet, I don't know if he had any good innings. I think एक आधी वो 30 प्लस की innings आई थी उसके अलावा कुछ था नहीं. but But not again, like very good strike rate yeah yeah. So I don't know what goes behind the scenes, but yeah, I think मेरे लिए वो कुश वाला ज्यादा apt बैठ रही है team. And considering कि हसरंगा और यानसन में choose हो सकता है depending on the But- pitch. बट मैं अपनी जो मैंने टीम बनाई है उसमें मैं बता रहा हूँ उसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि यू हैव टू मेक श्योर कि ये तीन बंदे जो हैं वॉशिंगटन सुंदर मार्को यानसन और पैट कमिंस
ये आपको बैटिंग से अच्छे कंट्रीब्यूशन दे। Yeah, for अदरवाइज फिर sure. ये बैटिंग लाइनअप बहुत वीक भी लग रहा है कि 5 बैट्समैन है आपके पास फिर। But I Yes. feel Jansen, Pat Cummins have that capability, and even Washington Sundar has shown that he can hit Yeah. a ball right. Washington So Sundar is a yeah, better bat than Pat Cummins and Jansen, yeah, Yeah. yeah. So I kind of like that. So yeah, हाँ, और वो सबसे अच्छा बैलेंस है कि अगर जो जैसे चिपॉक जैसा विकेट है तो आप मार्को यानसन को ड्रॉप करो और हसरंगा ले आओ। हसरंगा इज इक्वल yeah, गुड बैट्समैन और बॉलर भी exactly. अच्छा है। आरसीबी के लिए बैटिंग नहीं की, बस बाकी सब ठीक है. भाई आरसीबी के लिए बैटिंग मिली भी नहीं ना उसको इतनी जल्दी, क्योंकि जो Yeah, जीतने वाले मैच थे उसमें बैटिंग नहीं मिलती थी और जो हारने वाले थे उसमें 8वें ओवर में आ जाती थी बैटिंग। अब 8वें ओवर की तो उसने that's करी true. नहीं ना कभी बैटिंग। तो दैट्स द थिंग। सो बट यार वही है कि मुझे नहीं लगता कि मतलब आपको इतने प्लेयर सिलेक्शन करने चाहिए। और आई विल स्टिल से कि नॉट अबाउट चलो सिलेक्शन नहीं या टॉप 11 प्लेयर्स नहीं या वो नहीं, बट मुझे ये मूव अच्छा नहीं लगा कि भाई जस्ट बिकॉज आपने वर्ल्ड कप जीता है तो आप कैप्टनसी बना दी, exactly. 20 करोड़ Yeah. रुपए में ले लिया आई थिंक डजन। वो 24 करोड़ का टैग हैवीनेस ले आया कि भाई ये इसको या तो अब हमें एग्जैक्टली। रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही देनी है, एडेड ऑन प्रेशर, राइट? कि भाई तू Sustainable हाँ player. या I don't think this is the first and probably the last season for Pat Cummins with SRH, unless he does a miracle and wins them the trophy. Because I don't think 21, 22 crores is a sustainable fee for a long term. भाई या इस मामले में विल कम टू दैट स्क्वाड एज वेल, बट हमारे सैम करन तो एनकैश कर गए हैं फिर से. हाँ, वो तो एक अलग टीम है यार। दे We'll प्ले talk ऑन about डिफरेंट that as लेवल। well. दे प्ले ऑन डिफरेंट लेवल तो वो But anyways, तो Kush, why don't we rate the squads as you oh were yeah, for asking? sure. Yeah, I think batting, I would rate this team like middle order still being like foreign heavy of Markram and Klassen, but still they are like one of the finest players of spin. So for me, their batting is 9, right? Batting is 9. सोच के कि यार पूरा बैलेंस जो है टीम का अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, बॉलिंग आई विल से इट्स स्टिल लाइक 1 पॉइंट डाउन 8, बिकॉज अगर कई बार होता है कि अगर बैटिंग अच्छी ना हो तो बॉलिंग भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, फॉरेन प्लेयर्स आई विल रेट देम लाइक 10 on 10 the way they are opener, but only if they find the right balance. That's the only conditions I will say कि 4 इनसे बेटर फॉरेन प्लेयर नहीं मिल सकते आपको। बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, राइट, Hmm. लीडरशिप भी है, सारा कुछ है। उसके अलावा फिर जब आप डिसाइड करते हैं हमारा और क्या फैक्टर्स थे, डेप्थ। डेप्थ Depth. इज लाइक डेप्थ इज 100 on 10 आई थिंक। डेप्थ कुछ Yeah. ज्यादा ही है। Yeah. एंड दैट कैन मेक देम 0-2 लाइक बिकॉज Yeah. नॉट डिफाइंड आ जाएगा इनकी डेप्थ। तो आई डोंट नो कि इनका डेप्थ का क्या सीन है। बाकी 4 फॉरेन प्लेयर्स आई ऑलरेडी टोल्ड 10 out of 10, एंड 7 इंडियन प्लेयर्स भी जो है उसमें यार मुझे थोड़ा एक लग रहा है कि अगर वो लोग आउट ऑफ फॉर्म हुए तो इनको प्रॉब्लम पड़ जाएगी, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स में इनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो दैट विल बी आई विल स्टिल रेट 6 out of 10 Hmm. overall. For me, this team is 7 on 10 for paper, but 8 on 10 on paper, but 7 on 10 due to because their previous performances and that weird captaincy move. So I'll give overall 7. Giri, what do you think, man? Batting? Batting, yeah, definitely. I think eight, given the resources that they have. Again, with bowling as well, he may eight dunga, given the Indian talent as well as the foreign talent that they have. Depth, I would definitely give 10 on 10, but that's like a kid in candy store with too many options, and they end up Yeah. getting confused. और क्या था? Depth. What tool Oh, sorry. Depth. Benson, we talked overall. overall squad is 8.5 for me, and I'm hoping the Indian, especially the likes of Washington Sundar and Bhuvneshwar Kumar, the season pro. I hope they do well, and Yeah. I'm really looking for Washington Sundar to do well. He's one of my Yeah. favorites. Yeah. Yeah, just clarifying the things. कि मैं confused इसलिए हुआ because they have a lot of options, right? But that is a good problem to have as well sometimes. So for me, this team is, I actually mean it. They're very balanced side, depending if they figure out their 11. I'll stick to my words on that. तो बैटिंग में तो जिस हिसाब से कुछ आई थिंक आई टोटली एग्री विद यू, अगर वो 11 जाती है कंसिडरिंग दे आर इंडियन प्लेयर्स आर इनफॉर्म, मिडिल ऑर्डर इज स्ट्रांग, राइट? आई थिंक आई एम Yeah. गोना गिव देम लाइक 9 in the batting. Bowling, I feel Bhuvi is such player who's evergreen in IPL and he has so much more to offer in Yeah. these conditions. He cannot get obsolete at this level. So because Bhuvi is there and then he leads that option with foreign bowlers, I think it's definitely 9.5 for me for the bowling.
And the depth of the squad, I don't think so anybody can have to question that. 10 out of 10. For me, this team is 9.5 overall. 9.5. Yeah. Yeah, like I can, like I said in the beginning, I'll sum up in the same way. I'll say most balanced side, but if they find their right balance on in like right amount of time in the tournament, it Yeah. don't take like 14 games to find the right balance. यार पिछली चीजें आई नो इट्स स्टिल फ्रेश इन आवर माइंड्स कि क्या हुआ है पिछले सीजन में बट दैट्स हाउ यू लर्न एंड गो ऑन राइट so Yeah, I'm giving that benefit of doubt to all these guys because they're very seasoned cricketers, so I think they're going to overcome that, and they have a change in coaching as well, so you never know what route they and go. anyways तेरी ये दो टीमें हैं तो तेरे को वैसे भी इसी से ज्यादा उम्मीद है, वो तो हमें पता चल गया है. देखो कलर्स भी मैंने वही पहन लिए हैं. So, Yeah, anyways, yeah, yeah. thank you guys for your time. This is a wrap on Hyderabad, Sunrisers Hyderabad. We will be coming back with more videos on other squads. Thank you. Stay tuned. Keep liking us and watching our videos. Crickbucks signing off. Thank you.